Good morning, all. Welcome. सॉलिड स्टेट जो टॉपिक है उसका आज अपने को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेना है। ओके, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें से जो राइट जो आंसर रहेगा वो खाली आपको लिखना है वहां पर, या ए बी सी डी इसमें से जो भी राइट रहेगा वो लिखने का। ठीक है, समझ में आएगा सबके? चैट बॉक्स में आपको उसका जो राइट आंसर रहेगा उतना ही खाली लिखने का। अगर आपको लगता है कि ए है तो आप ए लिखो। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ए डेफिनाइट साइज एंड शेप डैश डैश। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसेस, डी कोलाइड्स। किसे रहता है डेफिनेट साइज और शेप? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी कोलाइड। अगर आपको लगता है कि ए इज द राइट आंसर तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में खाली ए लिखने का, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। यस, क्या आंसर रहेगा? बराबर है। दे हैव डिफरेंट साइज एंड शेप, किसको रहता है डिफरेंट साइज और शेप? सॉलिड को। नेक्स्ट, the constituent particles, the constituent particles atoms, ions and molecules are arranged in definite geometric pattern within a, काय में रहता है ये? ऑप्शन ए कोलाइड्स, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऑप्शन सी amorphous solids, ऑप्शन डी liquids. The constituent particles are arranged in definite geometric pattern within. क्या है राइट आंसर? पार्टिसिपेंट राइट आंसर लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। ऑप्शंस लिखना है खाली आपको, ए बी सी और डी। यस, इसका जो आंसर है वो है बी क्रिस्टलाइन सॉलिड। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न विच इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स atoms, ions and molecules are not arranged in definite geometric pattern within. Option A colloids, B crystalline solid, C amorphous solid, D liquids. क्या रहना चाहिए आंसर इसका? इसका जो आंसर है वो रहेगा सी। The constituent particles are not arranged in definite geometric pattern within amorphous solid. C answer is right. Next, amorphous solids do not have option A sharp melting point, option B geometrical shape, option C regularity of the structure, option D all of these. Yes, D answer is right. Amorphous solids do not have, amorphous solids do not have, ऐसा है ना? A sharp melting point, B geometrical shape, C regularity of the structure, D all of these, है ना? Do not have, ये पूरे नहीं रहता उसमें। amorphous solid में क्या नहीं रहता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं रहता है, रेगुलेटरी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं रहता है ना? डू नॉट कहा है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। The coefficient of A, B, and C are known as, the coefficient of A, B, and C are known as, क्या कहते हैं इसको? ए बी सी के कोएफिशिएंट को। ऑप्शन ए वीज इंडाइसेस, ऑप्शन बी बोहर्स इंडाइसेस, ऑप्शन सी अर्नियस इंडाइसेस,
ऑप्शन डी मिलर इंडाइसेस। चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। चैट बॉक्स में आंसर लिखो आप क्या है तो। द कोएफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी आर नोन एज वीज इंडाइसेस। ऑप्शन ए इज राइट। वीज इंडाइसेस जो है ना उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, they obtain by taking the reciprocals of the V's coefficient and multiplying by the smallest number that will express all the reciprocals as integers. Option A, Bohr's indices. Option B, Miller indices. Option C, Arrhenius indices. Option D, V's indices. क्या रहना चाहिए राइट आंसर? देखो स्टार्टिंग में लिखा है they obtain by taking the reciprocals of the V's coefficients and multiplying by the smallest number that will express all the reciprocals as integers. क्या रहना चाहिए इसका आंसर? बी आंसर इज राइट, बराबर है। बी जो है उसका राइट आंसर है। मिलर इंडाइसेस इज द राइट आंसर। Next, which of the following is a non-crystalline solid? Which of the following is a non-crystalline solid? Option है A NaCl सोडियम क्लोराइड, B ZnS जिंक सल्फेट, C रबर और D है PbI लेड आयोडाइड। तो which of the following is a non-crystalline solid? क्वेश्चन क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट, बराबर है। सी जो आंसर है उसका राइट है, रबर, है ना। रबर जो है वो कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, बाकी दूसरे जो है वो लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट, द लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी आर। द लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी आर। ए लॉ ऑफ constancy of interfacial angles, B law of rational indices, C law of symmetry और D all of these। बराबर डी जो है वो उसका राइट आंसर है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये तीनों भी जो है वो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है, इनको अपन लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। थ्री लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में ये तीनों भी लॉ है। नेक्स्ट, द एमोर्फस सॉलिड, द एमोर्फस सॉलिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड कौन है इसमें से? ए प्लास्टिक, बी डायमंड, सी ग्राफाइट, डी टेबल साल्ट। टेबल साल्ट यानी कि NaCl। द एमोर्फस सॉलिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। एमोर्फस सॉलिड कौन है इनमें से? प्लास्टिक, डायमंड, ग्राफाइट या टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड। इसका जो आंसर है वो क्या रहना चाहिए? ए आंसर इज राइट। प्लास्टिक इज द राइट आंसर। The amorphous solid among the following is plastic. A answer is right, plastic. Next, the Bragg's equation for diffraction of X-ray is। Bragg's equation क्या रहता है? N lambda is equal to what? Ta dash. Option A d sin theta. Option B 2d sin theta. Option C 2d cos theta. Option D d cos theta। Bragg's equation क्या रहना चाहिए आंसर? राइट, बी आंसर इज राइट। द Bragg's equation for diffraction of X-rays is n lambda is equal to 2d sin theta। n lambda बराबर क्या रहता है? 2d sin theta रहता है। तो इसका बी जो है वो उसका राइट आंसर है, 2d sin theta। नेक्स्ट, इन Bragg's equation n lambda is equal to 2d sin theta, d represents, ये जो d है वो क्या है? व्हाट इज डी?
D represents A option number of moles, wavelength, C interplanar distance, D है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? इन ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्बडा इज 2d sin थीटा, है ना, ये ब्रैग्स इक्वेशन है। तो इसमें से ये जो डी है, डी व्हाट इज द डी? डी रिप्रेजेंट व्हाट? राइट, सी आंसर इज राइट, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। डी यानी कि क्या रहता है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस रहता है। सी ऑप्शन बराबर है। नेक्स्ट, इन ब्रैग्स इक्वेशन n lambda is equal to 2d sin theta, n represents, ये n जो है वो क्या है? what is this n? n represents what? A number of moles, B interplanar distance, C principal quantum number, और D है the order of reflection, the order of reflection। बराबर, right, D answer is right, n represents the order of reflection, है ना, यानी क्या रहता है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। नेक्स्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या का एग्जांपल है? ऑप्शन ए आयोनिक सॉलिड, ऑप्शन बी कोवैलेंट सॉलिड, ऑप्शन सी मेटेलिक सॉलिड, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर सॉलिड। NaCl सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या रहता है उसमें? Na+Cl- आयंस रहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज नथिंग बट आयोनिक सॉलिड। सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसा है? आयोनिक सॉलिड जो है। इट इज राइट आंसर, ए आंसर इज राइट। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड, the particles are tightly bound and well arranged in a regular pattern is A, उसको क्या कहेंगे? Particles are tightly bound and well arranged in a regular pattern is option A liquid, option B solid, option C gas, option D all of these। क्या में रहता है ये? बराबर है, बी आंसर इज राइट। The particles are tightly bound and well arranged in a regular pattern is solid, है ना, solid में रहेगा। तो इसका बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, if a plane is parallel to, if a plane is parallel to an axis of crystal, its Miller indices will be, उसके मिलर इंडाइसेस क्या रहेंगे? If a plane is parallel to an axis, axis को parallel है, ठीक है, its Miller indices will be, तो मिलर इंडाइसेस क्या रहेंगे फिर? वीज इंडाइसेस नहीं पूछा है, मिलर इंडाइसेस पूछा है। ऑप्शन ए इंफिनिटी, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बराबर है, सी आंसर इज राइट। उसके जो मिलर इंडाइसेस रहेंगे वो कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, if 1a is to 1b is to 2c, अगर ऐसा है 1a is to 1b is to 2c है, then these indices are, these indices क्या रहेंगे? ऑप्शन ए 1 is to 1 is to 1, B 1 is to 2 is to 1, C 2 is to 2 is to 1 and D 1 is to 2 is to 2। these indices क्या रहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ ए बी और सी जो रहता है, ए बी सी के जो कोएफिशिएंट रहते हैं वो यानी कि वीज इंडाइसेस रहते हैं। तो ए का कोएफिशिएंट कौन है? 1, बी का 1, सी का 2। दैट्स व्हाई आंसर इज डी, ना, राइट, डी आंसर इज राइट। 1 is to 1 is to 2 is the right answer। Next, the ratio between, the ratio between the intercept on the axis for the different faces of the crystal can always be expressed by rational number is A, and कौन सा लॉ है वो? The ratio between the intercepts on the axis for the different faces
of the crystal can always be expressed by rational number is A. Number A, law of rational indices, law of constancy of interfacial angles, law of symmetry, और ऑप्शन डी है none of these. बराबर है, ए आंसर इज राइट. ये है लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस. नेक्स्ट. A crystal is said to have a dash of symmetry. A crystal is said to have a dash of symmetry if it can be divided by an imaginary plane into two parts in such a way that one part is the mirror image of the other. तो क्या कहने का उसको? A axis, B plane, C center, क्या D all of this. Which symmetry? कौन सी सिमेट्री है ये? A axis, B plane, C center, क्या D सभी axis plane center. Yes, B आंसर इज राइट. ये जो सिमेट्री है इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. If it can be divided by an imaginary plane, है ना, नाम में चाहिए imaginary plane, है ना, एक अगर आप प्लेन ड्रॉ करेंगे and it can divides into two parts such that one part is the mirror image of the other. तो वो जो सिमेट्री रहती है उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट. A crystal is said to have a dash of symmetry if an imaginary line passing through the crystal such that during rotation of the crystal through 360-degree exactly similar appearance occurs more than once. वो सिमेट्री क्या है? A plane of symmetry, B center of symmetry, C axis, D all of this. बराबर है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज राइट आंसर. सी जो है इसका राइट आंसर है. A crystal is said to have a axis of symmetry if an imaginary line passing through the crystal such that during rotation of the crystal through 360 exact similar appearance occurs more than once. तो इसका जो आंसर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज राइट आंसर. एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही रहता है. नेक्स्ट. An imaginary point within the crystal such that any line passing through this point intersects the opposite faces of the crystal at equal distance is a dash of symmetry. Options है A plane, B axis, C plane and axis लिखिए both A and B, और D है सेंटर. कौन सी सिमेट्री रहेंगी? राइट, बराबर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द राइट आंसर. क्योंकि क्या है यहाँ पर? एन इमेजिनरी पॉइंट विथ इन द क्रिस्टल, है ना, एक क्रिस्टल में इमेजिनरी पॉइंट रहेगा सच दैट एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट intersects the opposite faces of the crystal at equal distance is a center of symmetry. Okay, thank you. Any question? किसी कुछ क्वेश्चन है क्या?